जो अगला हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज वोकैबुलरी एग्जैक्टली इन इंग्लिश. To answer this, what is vocabulary in English? It is the word that means language to be understood by a specific person or maybe a group of people. Vocabulary can be categorized into two main types, that is active and passive. वो vocabulary जिसे हम डे टू डे यूज करते हैं, जो नॉर्मल लैंग्वेज में यूज होती है, वो एक्टिव vocabulary है. और जिसे कोई एक यूज करता है, बहुत रेयरली यूज करता है, वो होता है पैसिव vocabulary. ये इतना ज्यादा नहीं आता, ये सिर्फ आपके कंसेप्ट के लिए होती है. अब आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ वोकैबुलरी. वोकैबुलरी की टाइप्स कितनी है? इसकी बेसिकली 5 टाइप्स हैं, जिसमें सबसे पहली है लिसनिंग वोकैबुलरी. लिसनिंग वोकैबुलरी इट कंप्राइजेस वर्ड्स दैट अंडरस्टूड थ्रू हियरिंग. जो सुनने से हमें समझ आ रही होती है वो लिसनिंग वोकैबुलरी होती है. fetus कहते हैं जो न्यू बॉर्न बेबी होता है. A fetus may start recognizing some words when in the womb. Learning new word is a continuous process, and by the time you reach adulthood, almost 50,000 words are understood and recognized by you. Deaf people can be exposed to visual listening vocabulary for learning. Listening vocabulary छोटे होते से जो आप लोग लफ्ज सीख रहे होते हैं वो लिसनिंग वोकैबुलरी होते हैं. सबसे पहली जो वोकैबुलरी जो आप लोग सीखते हैं वो होती है लिसनिंग वोकैबुलरी, जो बहुत बचपन से हम लोग सीख रहे होते हैं. ओके, स्पीकिंग वोकैबुलरी ऐसी वोकैबुलरी जो आप बोलकर लफ्ज सीख रहे होते हैं वो होता है स्पीकिंग वोकैबुलरी. इट कंसिस्ट ऑफ वर्ड्स दैट वी एक्चुअली स्पीक. It has a horizon of around 5,000 to 10,000 words. These are used for giving instructions and conversations. The number of words in this category are comparatively lesser than listening vocabulary. 5,000 से 10,000 ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम स्पीकिंग वोकैबुलरी के जरिए सीख चुके होते हैं अपने अडल्ट एज तक. नेक्स्ट है रीडिंग वोकैबुलरी, जो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है. रीडिंग वोकैबुलरी कम्प्रीहेंशन के लिए बहुत जरूरी है. मेजर इंग्रेडिएंट ऑफ वोकैबुलरी बिल्डिंग इज रीडिंग. रीडिंग ग्रोज एंड डेवलप्स योर वोकैबुलरी. जितना आप पढ़ते जाते हैं आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है. फॉर एग्जांपल जब हम लोग स्कूल जा रहे होते हैं तो तब हमें इतनी नहीं आती, लेकिन वही बच्चा जो 5 क्लासेस पढ़ चुका होता है, मैट्रिक पढ़ चुका होता है, उसकी वोकैबुलरी स्किल काफी ज्यादा इनहांस हुई होती है एज कम्पेयर टू एक बच्चा जो केजी क्लास में या प्रेप में. The words we get to learn while reading text are termed as a reading vocabulary. It may happen that we understand words through reading vocabulary even we don't use it in a speaking vocabulary. Next है writing vocabulary. ऐसी vocabulary, ऐसे words जो हम लिख के सीख रहे होते हैं वो होते हैं writing vocabulary. Words we recall while expressing ourselves through writing are termed as writing vocabulary. Writing vocabulary is normally influenced by the words we are able to spell. We find it easy to express verbally through facial expression or intuition, but writing vocabulary depends on our expertise in vocabulary. जितनी आपकी vocabulary अच्छी होगी उतना ही आप ऐसे ये जो भी आपका टॉपिक है उसको लिख सकते हैं. Next है final vocabulary. It's a last final vocabulary. It is a collection set, a group of words that every person applies to justify their actions, beliefs, and lives. Final vocabulary comprises words a person wears, praise, contempt, expressly, feelings, hopes, doubts. कोई भी ऐसी vocabulary जो सब यूज करते हैं वो डेली यूज में होती है वो होती है फाइनल vocabulary. अब ऐसी ट्रिक्स हैं कि आप अपनी वोकैबुलरी को कैसे यूज किया वो इनहांस कर सकते हैं. हम लोग जब हमारा ये सब्जेक्ट था तो हमारी टीचर कहती होती थी कि आप लोग रोज थोड़ा थोड़ा रोज के 5 लफ्ज सीखते हैं, रोज का बेशक 2 लफ्ज सीख लें वोकैबुलरी के, और जब वो सीख लें तो जब अगले दिन आपने सीखने हैं तो आपने पिछले वाले को एक बार जरूर रिवाइज कर लिया करें, ताकि इससे आपकी जो डिक्शनरी वर्ड्स हैं वो बहुत इनहांस हो जाते हैं. इसका 5 अगर आप डेली के करें तो पूरे साल के आप कितने ज्यादा वर्ड सीख लेते हैं. कुछ आपको बहुत ज्यादा आते भी होते हैं. इसका कुछ ट्रिक्स हैं, लाइक डेवलप रीडिंग हैबिट. रीडिंग हैबिट जो है काफी ज्यादा इम्प्रूव करती है वोकैबुलरी को. Students can improve their vocabulary if they develop a reading habit. It is easy to improve vocabulary when they come across new words while reading a novel or newspaper article. And they can add new and unfamiliar words to their list. For example, अगर आप में से कोई नावल पढ़ता है तो उसे पता है, अगर कोई इंग्लिश नावल पढ़ता है तो उसे पता है कि नावल में काफी ज्यादा लफ्ज है ना वो नहीं होते, बहुत कम होते हैं जिसे हम जानते हैं.
फिर वो जो न्यू वर्ड्स होते हैं जिनके हमें मीनिंग नहीं आ रहे होते, हम उनके मीनिंग ढूंढते हैं, इससे हमारी वोकैबुलरी इनहांस होती है। इसके अलावा आप डिक्शनरी यूज कर सकते हैं।